Namaskar and a happy Republic Day to all the viewers, to the students, the parents and the teachers. I know today is a special day for all of us. It is a day our constitution came into force. It is a day where we became a nation in the true sense. It is a time for us to celebrate the coming of this constitution 73 years ago. It is a time to review the pillars of the constitution which have made our country what it is: strong, resilient and beautiful. As we celebrate, let us also pause to think about our duties as citizens, because all of us unfortunately only seem to remember the rights that we have as citizens and which have been beautifully encapsulated in the constitution. But we sometimes maybe lose sight of the duties that go with it. Today, let us all take a pledge that we will remember our duties, we will try and live by them, we will try and create the India of our dreams. The CBSE has initiated a number of programs keeping this in mind. One such program is the Ek Bharat Shresth Bharat campaign, of which all CBSE schools are a part. It is helping us to revisit the glorious traditions of our country, teach our children about these, draw linkages and take pride in all that our country stands for. As we move ahead, I think we all need to be a little more conscious of our rich heritage, our culture, maintain it, draw all the wealth from the roots of our culture and traditions, and yet move ahead, surge ahead in the new millennium, creating a better world. Because a better world is not going to come from somewhere else, it's going to come from all of us. So if we all work together, in tandem, remembering our duties towards our community, our state and our nation, that day is not far that we will have created what we dream of, an ideal state. The children of my school and of our country fill me with hope, because they bring with them new ideas, new technology and a lot of warmth and affection. And this is a beautiful combination that will ensure that the best practices come into being and take root in our soil. And when such great practices come together, the day is not far that we will have created or contributed to create the India of our dreams, the India we will all be proud of always. Take care, stay strong, Jai Hind. बुलंदी पर है जिसकी आसमान, अनूठी जिसकी शान है, सजा हिमालय मस्तक पर जैसे ताजे हिंदुस्तान है जिसका गणतंत्र अनूठा, वो मेरा हिंदुस्तान है। जाति धर्म का भेद नहीं है, समता का अधिकार है, मौके सबको मिले बराबर, कोई नहीं लाचार है। अनुपम है संविधान जहाँ पर कानून सबसे महान है जिसका गणतंत्र अनूठा, वो मेरा हिंदुस्तान है। अतिथि को जहाँ देव मानते, नदियाँ भी पूजी जाती हैं। मात पिता सर्वोच्च जहाँ पर भारत की वह भूमि विश्व पटल पर चमके एक दिन, सपना अपना महान है जिसका गणतंत्र अनूठा, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। Greetings on the celebration of India's 73rd Republic Day. By definition, a republic is a form of government in which a state is ruled by the representatives of the citizens. However, the true ethos of the word goes way beyond this simple definition. For a republic is what its people shape it to become. The dream of becoming an independent republic turned into reality for India on 26 January 1950, more than 7 decades ago. Today, our nation celebrates Republic Day with pride and patriotic fervor as we pay homage to the brave martyrs who laid down their lives for the freedom of the nation. Republic Day is not just a politically important day, it has great emotional significance too. The celebration of Republic Day is the recognition that we live in a sovereign, secular, and democratic nation that is based on the principles of justice, liberty, equality, and fraternity.
For the youth, it is a day to take pride in the Constitution and the rights it confers, as the nation unfurls the hues of saffron, pure white, and divine green, while marveling at the extraordinary accomplishments of our founding fathers. With one of the youngest populations in the world, India's biggest asset is its youth, and it's up to them to carry forward the legacy left behind by the makers of our Constitution. As a country, we're at a critical juncture of development, and the beginning of this new era will mark the rise of a new India propelled by its youth. Being the youth of our country, let us pledge to keep it protected. Let us promise to work for its growth and development. Jai Hind. जयतु भारतम् जयतु भारतम् वसुदेव कुटुम्बकम् जयतु भारतम् जागा हुआ भारत है ये 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 जयतु भारतम् जयतु भारतम् खुद जियो और को भी जीने दो यही तो है जिंदगी का रास्ता तुम्हें अमन की शांति का वास्ता खुद जियो और को भी जीने दो यही तो है जिंदगी का रास्ता तुम्हें अमन की शांति का वास्ता धरती सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा बोले पपिया कोयल गाए बोले पपिया कोयल गाए सावन गिर गाए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं We'll be presenting before you a recitation of poems by the students of our school. The poems collected from across the country reflect the ethos and diversity of our nation. Our first recitation is in a language from the abode of the divinities, Devanagari, or as we know it, Hindi. Adishri will now talk about a poem composed by a Hindi teacher, Miss Anju Bhatnagar. The Hindi poem इंसानियत जहां का नारा है. The poet has seen qualities of humanity in Indians. However, there are few who instigate others for fulfillment of their mere selfish needs and tend to divide mankind. The poet says that she has complete faith in future generations, that their education will inspire them to choose the right path and build a new and better nation. इंसानियत जहां का नारा है वह हिंदुस्तान हमारा है.
हर बार ये साबित होता है कि भारत सबसे निराला है। जब जरूरत सबकी आन पड़ी और खतरे में जब जान पड़ी, तब हमने क्या ये सोचा था, क्या इस दुनिया से पूछा था? साथ हमारा देने वाला, राह से उठाने वाला, अपने गले लगाने वाला, साथ सदा निभाने वाला, सरहद पर जान लुटाने वाला हम में से एक है और दिल से कितना नेक है। इंसानियत जहां का नारा है वह हिंदुस्तान हमारा है। जात पात ना पूछी किसी ने, ना किसी नेता का नाम लिया। सभी एक दूजे के साथी थे और मन से कुछ जज्बाती थे। ना अफवाहों का जोर था, ना नेताओं का शोर था। बाटे संग चाय के प्याले थे, भारतवासी मतवाले थे। इंसानियत जहां का नारा है वह हिंदुस्तान हमारा है। अब सबको हमें जगाना है, एक नया देश बनाना है, जहां कोई धर्म ना हो, कोई जात ना हो, बस इंसानियत हो। एक दूजे की जान बने हम, इंसानियत की पहचान बने हम, एक नया हिंदुस्तान बने। इंसानियत जहां का नारा है वह हिंदुस्तान हमारा है। मेरा भारत मेरा अभिमान। Our next poem arouses nationalistic pride and patriotism through its strong words. It is in Bengali and reflects the surge of nationalistic renaissance which was ignited by Bengal in our country. Over to Arnika. Shri Jyotirnath Thakur, the poet of the upcoming poem Chol Re Chol Shobe Bharata Shantan, was a musician, a composer, an editor, a scholar, a theatre artist, and a painter. He was born in 1849 in Calcutta and was the elder brother of the first Indian Nobel laureate, Sri Rabindranath Tagore. In this poem, he passionately urges the children of India to respond to the motherland's call for freedom. My friend Dishita Chaudhary will now like to recite the poem for us. চল রে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে অহবান চল রে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে অহবান বীরা দর্পে পরশ গর্বে সাদ রে সাদ সবে দেশের কল্যাণ চল রে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে অহবান পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন ওঠো জাগো সবে বলো মাগো তবে পদে শোপিন পরণ সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে অহবান। After our Hindi and Bengali poems, we now have a poem in one of the oldest languages from the Dravidian family, Tamil. Right from 300 BC, Tamil is one of the only languages of contemporary India to have a recognizable classical past. Anya will now introduce a poet whose love for the nation in its ancient yet contemporary language still inspires the youth. Subramanya Bharatiyar was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist, and a social reformer. Popularly known as Mahakavi Bharati, he was a pioneer of modern Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figures of all time. Through his writing, he exhorted the people to join the independence struggle and worked vigorously for the freedom of our country. I would now like to invite Malika to recite one of his poems, Velli Pannamalai, that he wrote to celebrate India's liberation from the British rule. வெள்ளி பனிமலை மீதுலவுவோம் அடி மேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம் வெள்ளி பனிமலை மீதுலவுவோம் அடி மேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம் பள்ளி தலம் அனைத்தும் கோயில் செய்குவோம் எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் கட்டுவோம் வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பெயர் செய்குவோம் வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பெயர் செய்குவோம் எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் கட்டுவோம் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் உண்மைகள் சொல்வோம் பல வன்மைகள் செய்வோம் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் உண்மைகள் சொல்வோம் பல வன்மைகள் செய்வோம் எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் கட்டுவோம் நாங்கள் தோல் கட்டுவோம். Bhuvnesh will introduce us to one of our friends from class 11th who will be reciting a poem expressing his love and patriotism for our motherland.
This poem has been composed by my friend Gurtej and is in the language of the fearless Punjabis. The 1947 partition of the Indian subcontinent into independent nations of India and Pakistan resulted in one of the largest mass migrations in human history, where thousands of innocent lives were lost. Our young poet Gurtej Singh Sandhu, while researching, moved by the cascade of events during this period, wrote a beautiful poem called Mera Sona Hindustan, which will be recited by Gurman Singh. मेरा सोना हिंदुस्तान वे सुहावन दे परोए मोती वे दुध नाल भरी रेखा गुलजार वांगू महकदा रवे मेरा हिंदुस्तान ना कोई ओपरा ना कोई गैर ना पराया ना बेगाना तू इंसान मैं इंसान तेरा मेरा है याराना मोदी तानियां हर पासे जुड़ियां जान मुजफ्फर की लेना दुख सुख विच शामिल होना है साडी पहचान गुलजार वांगू महकदा रवे मेरा हिंदुस्तान बोलन दा अंदाज है होर तेरी मेरी वाह है तोर भावे अलग है जरिया अपना पर दिलो बोला एक ही बोल पत्ते टहनियां असी इस बूटे दे साडी वसी है इस विच जान गुलजार वांगू महकदा रवे मेरा हिंदुस्तान गुलजार वांगू महकदा रवे मेरा हिंदुस्तान. Right from the days of Socrates to Winston Churchill and Mahatma Gandhi, words have had the power to ignite and influence. A self-composed poem by one of our classmates makes us reflect and imbibe this power. Over to Shivay. Lieutenant Colonel Mitali Madhumita was the first female officer in the Indian Army to receive the Gallantry Award. She received the Sena Medal in 2011 for the exceptional courage she showed during the attacks on the Indian Embassy in Kabul. She is a source of inspiration for each and every citizen of the country, and her life is a testament towards possessing unwavering commitment and a sense of duty towards one's calling. I now call upon my friend Ahana to recite a self-composed poem on Colonel Madhumita's courageous feat. A gallant heart, warrior at best, her bravery incites the spirit of the rest. She attempted the job and tested her powers and went on to break one of such inscrutable barriers, the barrier of gender and of equality. She showed the people the strength of her ferocity. The first woman officer in the Grand Indian Army to receive a Sena Medal in her 20s. A fiery day in Kabul, she showed her worth, the brilliancy of her chivalry, how she came forth. She inspires me and every young girl who reads about her story to not be afraid to unfurl. She embodies the energy of one who follows the righteous path. Not the easy, not the popular, but to follow your own instincts. She teaches us how to face rejection, how not to fall back, but to go back harder the next time, that your future isn't just black. She explains how to fight, how to stand up for oneself. Let your work speak for itself. Let your silence silence them. We believe in peace and peaceful development, not only for ourselves, but for people all over the world. Every citizen of India must remember that he or she is an Indian and has every right in this country, but with certain duties too. बूंदों से बनता सागर, फसलों की धानी चादर, देखा है हमने सब यहाँ. ओ पर्वत की चोटी चढ़ना, मेहनत से आगे बढ़ना, सीखा है हमने सब यहाँ. ओ सोने की चिड़िया हो या मिट्टी का घर औंधा, सपनों का अपना है जहाँ. ये देश है वीरों का, ये देश है वीरों का, इस देश की हर गाथा है महान. हर लफ्ज ये कहता है, हर आंख में रहता है, हर सांस में बहता है हिंदुस्तान, हर सांस में बहता है हिंदुस्तान. Strength does not come from physical capacity, it comes from an indomitable will. In a democracy, the well-being, individuality and happiness of every citizen is important for the overall prosperity and happiness of the nation. A nation's culture resides
in the hearts and in the soul of its people. Amongst the major tasks before us, none is of greater importance for our strength and stability than the task of building up the unity and solidarity of our people. तू आन है, तू शान है, तू हम सबकी पहचान है। हर रंग में रंगा है तू, हर धर्म का अभिमान है। हर सोच में, हर सांस में, कदम कदम जी जान से। जुदा न हो, टूटे न हो, दुआ है ये भगवान से। Vande